Good morning, students. According to cell, the unit of life, we will learn today structure of cell. Okay. There are in the presence of nuclear membrane or absent of nuclear membrane, or on the basis of structure of nuclear, there are two types of cells are found: prokaryotic cells and eukaryotic cells. Okay. According to theory of organic evolution, prokaryotic cells originate at first, which later on changed into eukaryotic cell by organic evolution. And structure of prokaryotic cell and eukaryotic cells we will discuss about. अगर हम यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल्स के बारे में बोलें तो सबसे फर्स्ट हम प्रोकैरियोटिक सेल्स के बारे में जानते हैं. Here the pro means primitive, ancient, old, okay, and the karyon means nucleus. So the cell which is primitive type of nucleus or ancient type of nucleus or old type or nucleus present are called prokaryotic cells. So bacteria and blue green algae are typical prokaryotic cells, and they do not have intracellular membrane. जो सेल है उसके अंदर सेल मेम्ब्रेन से घिरे हुए कोई भी ऑर्गेनेल्स इसमें नहीं होते. लाइक न्यूक्लियस, जो न्यूक्लियर सब्सटेंट हैं, लाइक डीएनए, इसके चारों ओर कोई भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है ना. सो एग्जाम्पल इज देयर इज नो कंपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ द सेल. सेल के अंदर कंपार्टमेंट नहीं होते, मीन्स अदर सेल ऑर्गेनल्स जो मेम्ब्रेन से घिरे हुए हों नहीं होते. इवन द जेनेटिक मटेरियल और न्यूक्लियस इज नॉट इनक्लोज्ड इन द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, and it is in the form of circular DNA molecules suspended in the cytoplasm itself. Okay, and there is no nuclear membrane enclosing it, right? Prokaryotes have ribosome to synthesize protein in the cytoplasm. इसमें राइबोसोम होता है which is 50s and 30s subunit. Okay, and prokaryotes have do not have mitochondria, endoplasmic reticulum, Golgi bodies, lysosome sorry chloroplast like cell organelles. So here we see typical bacteria or prokaryotic cells. prokaryotic cells जो हैं वो जनरली यूनिसेलर होते हैं एंड माइक्रोस्कोपिक होते हैं, एंड उसके चारों ओर कैप्सूल का आवरण हम देख पा रहे हैं. देन सेल वाल उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, एंड सेल मेम्ब्रेन में रेस्पिरेटरी चैन होता है, ये रेस्पिरेशन के लिए बने होते हैं. एंड डीएनए जो है वो वृत्ताकार या गुच्छों में सर्कुलर शेप में या बंचेस में ओपन होते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर. इसमें आरएनए और राइबोसोम्स होते हैं बिकॉज ये जो है वो प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं, है ना. अपने लिए प्रोटीन सिंथेसिस करके आरएनए के हेल्प से राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस करता है, एंड ये जो एक्टिविटी इसके अंदर होती हैं लाइफ के लिए. ओके, सो we will discuss about eukaryotic cells. Then U means well, means developed, means क्या कहना चाहिए, अभी का बहुत ज़्यादा डेवलप्ड सेल, बाद का डेवलपमेंट के क्रम में. एंड caryon means nucleus, which have well developed nucleus and they are encircled by nuclear membrane is called eukaryotic cells. So animals and flowering plants having definite nucleus in their cells are known as eukaryotes.
Their cell contains nuclear membrane with surrounded the genetic material like DNA to form nucleus. Okay. Typical eukaryotic cell consists of jelly-like translucent protoplasm or cytoplasm enclosed in a plasma membrane. Okay. And in plants, plasma membrane is surrounded by a rigid and porous cell wall of cellulose. प्लांट सेल में यहाँ पर एक सेल्यूलोज का बना हुआ हार्ड सेल मेम्ब्रेन के बाहर एक और कवरिंग होती है, विच इज कॉल्ड सेल वॉल. The cell wall provides plants plasma membrane is surrounded by a rigid and porous cell wall of cellulose. The cell wall provide a distinct shape of the cell, and the fluid outside the nucleus is called cytoplasm. Okay, and it contains several organelles like mitochondria, Golgi complex, endoplasmic like this Golgi complex and endoplasmic reticulum and ribosomes, lysosomes, chloroplast if it is plant cell, etc. are present, and these organelles can be identified on the basis of their appearance and chemistry when प्रॉपरली स्टैंड. अगर हम इसको स्टैंड करें कलर से तो ये अपने प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग जो है वो अपना ओरिजिनल शेप में हमको दिखाई देंगे माइक्रोस्कोप में. ओके, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनल्स ऑफ द सेल इज न्यूक्लियस which is enclosed by a double porous membrane known as the nuclear membrane. Right? Nucleus is the controlling center or seat of organization, and vacuoles like this are the fluid filled membranous vesicles in plant cells. One or more vacuoles are present in the cytoplasm. In mature plant cell, a large central vacuole spread the cytoplasm in the form of thin layer or as peripheral lining just inside the plasma membrane, and the membrane around the vacuole is called tonoplast. Okay, and then we will talk about structural organization of the cell. The body of organisms, both unicellular and multicellular, is made up of a cell, different shape and size. These cells are basically structural and functional unit of life. जैसे कि हमने पहले पढ़ा था, सेल जो है वो किसी भी ऑर्गेनिजम्स का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है लाइफ का. एंड स्ट्रक्चरली अ सेल इज मॉस ऑफ प्रोटोप्लाज्म और प्रोटोप्लास्ट विच इज सराउंडेड बाई protective and selectively permeable membrane called plasma membrane or plasma lemma, or simply called cell membrane. In plant cell the membrane is again surrounded by a rigid cell wall. ये सब हम पहले पढ़ चुके हैं. Okay, and though ancient philosopher believed that organism's body is made up of teeny unit, the history of cell being with the publication of the book Micrographia in London by Robert Hooke in 1965. For the first time he observed honeycomb like structure in cork cell of Quercus suber. He named the chamber as cell as they looked like compartment. सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने 1965 में कॉर्क के सेल्स को कट करके सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप में देखा और इसमें चेम्बर लाइक स्ट्रक्चर देखा जो कि डेड सेल था, और इस चेम्बर लाइक स्ट्रक्चर को उन्होंने सेल नाम दिया. सो सेल्स आर द subtainable unit of organisms as these are capable of biosynthesis, multiplication, energy transformation and self reproduction.
ओके, बाद में और भी जब रिसर्च हुआ तो लिविंग सेल्स का भी स्टडी किया गया. एंड व्हेन वी टॉक अबाउट शेप एंड साइज ऑफ सेल्स, द सेल्स में बी रेक्टेंगुलर, cylindrical, oval, rounded, elongated, needle-like, triangular, polygonal, cuboidal, flattened और irregular in shape. यहाँ पर हम देख पा रहे हैं डिफरेंट टाइप के सेल का शेप देख पा रहे हैं. राउंडेड, इरेगुलर, लॉन्गिट्यूडनल, है ना. यहाँ पे हम डिफरेंट टाइप के सेल्स का शेप एंड साइज होता है अकॉर्डिंग टू देयर प्लेस एंड फंक्शन. द साइज ऑफ द सेल वेरीज फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिजम्स. हर एक ऑर्गेनिजम्स में ये अलग अलग टाइप के होते हैं. माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम इज द स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म सेल. रिमेंबर इट. Mycoplasma gallysepticum is the smallest organisms cell, and their diameter is about 0.1 micron to 0.00 millimicron. The length of our nerve cell is about 90 centimeter. ये हमारा जो नर्व सेल होता है, कोई नर्व सेल जो है वो ब्रेन से लेके हमारे टो लेग के टो तक लंबा हो सकता है, यानी अबाउट 90 सेंटीमीटर तक लंबा हो सकता है. द एग ऑफ बर्ड ऑस्ट्रिच, ऑस्ट्रिच का जो एग होता है इज़ द लार्जेस्ट सेल ऑफ द वर्ल्ड. ओके, रिमेंबर इट. एंड द डायमीटर ऑफ दिस एग इज़ अबाउट 175 millimeter. And Acetabularia, an algae, is an unicellular algae, the length of which is about 10 centimeter. So students, आज के लिए हम इतना ही पढ़ते हैं. नेक्स्ट डे हम इसके आगे का चैप्टर पढ़ेंगे. एंड तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर.